Today in this video we will discuss about spinal cord. Spinal cord is a structure. See, this is our central nervous system where we have brain. These are the two hemispheres of the brain, and then we have a spinal cord. Okay. So today we are going to discuss about the spinal cord. Here we have some other parts of the brain, like this is the cerebellum region, like this. So this is the entire structure of central nervous system. In central nervous system we have brain and spinal cord. Spinal cord is the cylindrical structure which is located in spinal canal of the vertebral column. ये vertebral column है, इसके अंदर spinal canal है, and inside it there is a spinal cord. You can understand with an example. This is your pan cover. Inside the pan cover there is a refill, and inside the refill there is an ink. Okay. So this way this entire structure is connected. Spinal cord is also well protected by meninges. The same way meninges we have in brain. Three meninges are there. That is meninges, dura mater, arachnoid and pia mater. क्या क्या है? Meninges are dura mater, outermost top layer, then arachnoid middle layer, and the pia mater. This is a similarity with brain. The another similarity with brain is CSF, cerebrospinal fluid. In the same way, cerebrospinal fluid is present in brain, and similarly cerebrospinal fluid is present in spinal cord also. Now, what is the difference in the structure of spinal cord and all, and what is the function? Let's understand now. अभी हम पहले इसका structure समझेंगे कि what is the structure of spinal cord, how spinal cord helps in activities. Basically, spinal cord helps in reflex action. Now, what is the reflex action? Reflex action is a very quick action. एक बहुत quick action होता है reflex action, and it is a spontaneous involuntary action. I will give you some example of reflex action. There are two kind of reflex action. One is inborn reflex action and one is the conditioned reflex action. When you are born and your mother feed you, or either by the breastfeeding or by some spoon or by some bottle, anyway, किसी भी तरीके से. So when you have some milk in your mouth, you swallow it. No one teach you how to swallow. That is the inborn reflex. When someone put a light on you, then you blink your eyes. That is a simple reflex. No one teach you. Okay. In the similar way, we have some conditioned reflex. Conditioned reflexes are the reflexes which we admire during our life cycle. जो हम अपनी life में adopt करते हैं. That is called conditioned reflex. Like typing is a conditioned reflex, playing guitar is a conditioned reflex, knitting is a conditioned reflex. When you when there is a saliva on when you heard about your favorite food, that is a conditioned reflex. देखिए, मैंने आपको कोई ऐसा food का नाम लिया that you have not eaten, that you have not tasted any before. You can't produce saliva in your mouth for that. आपको उसके लिए लालच नहीं होगा. You have tasted pizza, and if I am talking about pizza right now, that can produce saliva in your mouth. But if I am talking about something, there is one South Indian dish, rasam, and if you have not tasted, तो आपको उसके लिए मुंह में पानी नहीं आने वाला. मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि वो बहुत खट्टा होता है, इमली के पानी से बनता है. Okay, so there are two kind of reflexes, inborn reflexes and conditioned reflexes. Now, reflex action के बारे में पता कैसे चला? There was a scientist, Pavlov, who first discussed about reflex action. He has done some experiment on dog, and the experiment was like that. He put a clock, और उस डॉग को इस तरीके से ट्रेन किया गया एवरी डे से at 4 o'clock
he rang a bell and then he gave food to that dog. वो उस डॉग को उसके बाद में खाना देते थे. तो what after 10-15 days dog has learned that whenever the bell will ring, I will got the food. And after some time, what he has done, he has not given the food. He just rang the bell on the same time, and this time he has not given the food. But the saliva was there in the mouth of dog, because the dog was conditioned for this exercise. Similar experiment done on a girl. In that girl को हमने क्या किया? We have given a one teddy bear, and whenever we were giving the teddy bear, every time we play some dangerous sound, and that girl leave that teddy bear. So what the girl has learned, that whenever I will got this teddy bear, there will be some डरावनी sound. This time we have given the teddy bear and girl thrown it, but still there was no sound. कोई भी dangerous sound हमने नहीं बजाई थी. But the girl was conditioned for that. आप साइकिल चलाते हैं, पहली बार जब साइकिल चलाते हैं, आप देखते हुए चलाते हैं कि अच्छा अभी ब्रेक है, अभी कुछ है. After 10-15 days you condition. आप बात करते हुए भी कोई साइकिल चला पाते हैं. Okay, this all is controlled by spinal cord, because spinal cord का जो response है, it is very quick. अब सामने ट्रक आ रहा है और आप सोच रहे हो, अरे मैं बैल ब्रेक लगाऊं या ना लगाऊं, इतने में तो ट्रक ने काम खत्म कर देना है. वो नहीं हो सकता ना. That action is taken by spinal cord. Okay, so now let's understand how spinal cord is designated or how it is designed. This is the central part of the spinal cord. In spinal cord, this is the central canal. This is the part of gray matter. In spinal cord, gray matter is outside the spinal cord. And here also there is a fissure-like structure. Okay, and these are the nerves which arise from the spinal cord. That is called spinal nerve. इसको हम क्या बोलेंगे? Spinal nerve. So this region is gray matter. This region is white matter. This region is central canal. Okay. Now here is some receptor. आपने मानो ये आपका हाथ है and you have touched a hot plate. This message will carried by sensory neuron. ये इनके dendrites ने message लिया, sensory neuron के cyton को दिया. This is the cyton region and they carry message here. Okay, ये message को यहाँ लेकर आए. Now, this region is called dorsal root because it is present on dorsal side. This is called sensory neuron because it carry message from receptor. Okay, and this part is known as dorsal root ganglion. Dorsal root ganglion. Okay, now what is dorsal root ganglion? Dorsal root ganglion is the aggregation of the cyton. किसका cyton है ये? ये देखिए sensory neuron के ये dendrites हैं. ये sensory neuron के cyton का एक aggregation है. That aggregation is called ganglion. Ganglion is the aggregation of cyton. ये इसका axon है. It will carry message. Now here there is interneuron. एक interneuron है जो ये मैसेज इसको लेगा सेंसरी न्यूरॉन से. दिस इज interneuron or associated neuron. Okay, now interneuron will give message to motor neuron and motor neuron will carry message to effector organ और ये effector organ में मैसेज लेकर जाएगा. ठीक है.
सो अब देखिए दिस पार्ट इज वेंट्रल रूट, ये वेंट्रल रूट है आपका। ओके, दिस इज मोटर न्यूरॉन। अब वेंट्रल रूट गैंग्लियन करके जनरली कोई शब्द नहीं होगा, बिकॉज वेंट्रल रूट का जो गैंग्लियन है ये तो अंदर ही है। गैंग्लियन क्या है? गैंग्लियन इज द एग्रीगेशन ऑफ साइटोन, और वेंट्रल रूट का साइटोन अंदर ही है, ग्रे मैटर के साथ ही है, तो बाहर कोई वेंट्रल रूट गैंग्लियन करके नहीं होगा। ओके, सो दिस पाथ, दिस कंप्लीट पाथ इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। इस पूरे कंप्लीट पाथ को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। नाउ व्हाट इज द रिफ्लेक्स आर्क? Reflex arc is the entire path. This is the shortest path carried from receptor to effector to carry any message. यहाँ से इस मैसेज को ले जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर होता है that is called reflex arc. अब देखिए आप एक एक चीज को समझिए। हमने डोर्सल रूट को समझा। डोर्सल रूट क्या है? जो पोस्टीरियर रीजन में जो रूट एरिया है, या जो पोस्टीरियर रीजन में जो सेंसरी फाइबर को कैरी कर रहा है, दैट पार्ट इज डोर्सल रूट। डोर्सल रूट गैंग्लियन क्या है? डोर्सल रूट गैंग्लियन, डोर्सल रूट मतलब डोर्सल साइड पर है। गैंग्लियन टर्म जो आया है वो आया है साइटोन से, और साइटोन किसका? सेंसरी न्यूरॉन का। सो डोर्सल रूट गैंग्लियन इज द एग्रीगेशन ऑफ साइटोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। देन वी हैव वेंट्रल रूट। दिस लोअर पार्ट इज नोन एज वेंट्रल रूट, जो वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है, एंड इट कैरी मोटर न्यूरॉन्स। इसके अंदर गैंग्लियन नहीं होंगी क्योंकि इनके गैंग्लियन अंदर ही होते हैं। Now inside it there is a H-shaped structure. This H-shaped structure is called gray matter, which is in the center, and the outer portion is known as white matter. This part consists of meninges like in brain. This part also filled with cerebrospinal fluid, and the cerebrospinal fluid का आपको काम पता ही है, diffusion of gases, diffusion of nutrients, diffusion of waste में help करते हैं। Now what is the function of spinal cord? Spinal cord का function क्या है? This is the reflex center. ये reflex center के जैसे काम करता है। Number 2, it conveys sensory impulses from the periphery, बाहर से periphery to central nervous system, and motor impulses from spinal cord to periphery. यहाँ से जिस तरीके से ब्रेन काम करता है, सिमिलरली ये काम करने में हेल्प करता है। सो व्हाट आर द पार्ट्स? दिस इज द रिसेप्टर पार्ट विच रिसीव द स्टिमुलस, जो स्टिमुलस को रिसीव करेगा। यहाँ स्टिमुलस हमने क्या लिया? जो हॉट प्लेट को टच कर रहा है। देन सेंसरी न्यूरॉन विच कैरी मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर। देन सेंटर, ये सेंटर में गया। यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स, और एसोसिएशन न्यूरॉन्स होंगे। मोटर न्यूरॉन्स विल कैरी इम्पल्स टू effector organ. This part is effector organ. Okay, we have discussed conditioned reflexes, we have discussed unconditioned reflexes. So there are few questions on the basis of this topic. Question number 10 यदि मैं आपकी बुक से लूँ, this is अनीता प्रसाद वन से। So name the parts 1 to 5. If you can see here, question number is name the parts 1 to 5. Part 1 is it is carrying message from the receptor cell, you can see. So this is a sensory neuron. This is a dorsal root ganglion. This is white matter. This is motor neurons, and this is the spinal nerve. Okay. Using the letters of alphabet shown in the figure, indicate the direction in which an impulse enter or leave. कहाँ से enter करता है? B से, C and then A. What is the term given to point of contact between two nerve cells? यहाँ पे दो nerve cells contact करते हैं, उस point को क्या बोलते हैं? या उसको बोलते हैं synapse. What is meant by simple reflex? Inborn reflexes are called simple reflexes. Give 2 examples: blinking of eyes, swallowing. These are the simple reflexes. How does the arrangement of nerve cells in spinal cord differ from that in the brain? So in spinal cord, white matter is outside and gray matter is inside. तो यहाँ कैसे होगा? साइटोन इज टूवर्ड्स द सेंटर एंड एक्सॉन इज टूवर्ड्स द पेरिफेरी, उल्टे होंगे। ठीक है। सो रिवाइज दिस टॉपिक, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क आइदर थ्रू द कमेंट बॉक्स और थ्रू एनी ऑफ द वे वेर एवर यू वांट। ओके बच्चों, टेक केयर।